Good morning, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome for the morning session. Guys, please write yes in the chat if I'm audible to you. So, yes, thank you guys for confirming. Um so, guys, let's welcome everyone for the morning session, and we will have Nikun sir with us today for the morning session. कल की बहुत अच्छा खासा एक हमने निफ्टी में बाउंस बैक देखने मिला था, राइट, जहाँ पे एक पॉजिटिव नोट पे ओपनिंग गैप ओपनिंग देखने मिला था हमें मार्केट में, और अ वेरी पॉजिटिव नोट एक क्लोजर भी देखने मिला था, राइट। काफी दिनों बाद हमने ये अच्छा खासा एक मोमेंटम देखा था मार्केट में, राइट, एंड उसी को शायद कंटिन्यू करते हुए मार्केट ओपन फ्लैटिश टू पॉजिटिव, राइट। अगर हम देख रहे हैं तो ऑल द इंडाइसेस हैव ग्रेजुअली ओपन पॉजिटिव, राइट। तो एक अच्छा खासा तेजी देखने मिल रहा है मार्केट में, राइट, एंड वी होप दैट इट विल कंटिन्यू, सो दैट यहाँ से एक रिकवरी देखने मिले जो भी हमने मार्केट में गिरावट देखने मिला था, राइट, काफी कुछ 4-5 महीनों से। आई होप वी कैन सी, वी विल सी, आई वुड से कि ये बाउंस बैक एंड इट होप इट सस्टेन. So to talk more about it, Devin sir is already here, with us, and he will talk in very depth about the market. काफी सारे stocks में actions भी है, right? काफी अच्छे खासा momentum है. So we will definitely have a discussion about it as well, and we'll share the stock recommendations as well. On the terms of intraday, in terms of delivery ideas, right? कल हमारा निफ्टी expiry भी होगा, right? So we will definitely going to talk on the same as well. So before I hand over the session to Nikon sir, so guys, just a very quick, announcement. I guess कल अनुज ने भी आपको बता दिया होगा that Stockholm, our community has been, you know, nominated for the Global Community Award, right? तो अगर आप लोगों को पता नहीं, it's a very great news for us, for you all guys as well, right? क्योंकि आप लोग के बिना support के we would have not been here, right? हमें वो reach नहीं मिल पाता, right? So yes, please make sure you go and vote for us. I guess Anuj have already shared yesterday, but I will definitely share once again. The link and the steps how to go and vote. So please make sure you go and vote us. Stockholm जो हमारा community है global level पे it has been nominated, right? And just you guys what I have to do is just create a noise around it. Please go and support us from just voting. And also please make sure you vote us. You vote Anuj Sharma as well because he has been also been nominated as a community leader. So yes, just a very quick announcement on this. I'll quickly hand over the session to Nikun sir. Nikun sir, over to you. You can start the session. Yes, I hope my screen is visible, right? Absolutely, sir. You're good to go. Perfect. So, good morning, Avinash. Good morning, everyone, and welcome to the morning session. And start karte. It's a good day. It was a very good day yesterday. After काफी दिनों बाद, we had seen such a broad-based rally in the equity market, and Nifty almost 300 points के gain से बंद हुआ, and Bank Nifty likewise almost 1,000 points rally intraday. काफी दिनों बाद हुआ है, और कल from the morning first tick gap up opening के बाद follow up buying, and after so many days थोड़ा सा momentum था within the market, and which helped the index, which is Nifty, closed around 22,800 के आसपास, above 22,800. And 22,800 is very crucial juncture, as we know, as we've seen, as you can see on the chart as well. जो previously एक support का काम कर रहा था, वो अब तक एक hurdle का काम कर रहा है, but as of now, we are comfortably trading above 22,800, which is a positive sign. Until this momentum continues, this up move can get extended towards 23,000 and 23,200 k aspas. So for the time being, positive stance should be maintained in Nifty. जो कल का गैप एरिया है, that is around 22,600, तो जब तक 22,600 के ऊपर है तो थोड़ा सा डिक्लाइन आता है, तो इट्स अ गुड री एंट्री पॉइंट इन द इंडेक्स, एंड वी कैन सी अ मूव टुवर्ड्स 23,000 and 23,200 on the higher side, and नीचे में 22,600 is the immediate support, and उसके नीचे 22,400 450 is the second support. So as of now थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रखना चाहिए निफ्टी में. Dips should be bought, and 22,600 is very good support immediate per se for this week and for tomorrow's expiry in Nifty. And ऊपर में 23,000 and 23,200 are the immediate
resistance point and the levels that we can see if we hold above by 22,800 going forward. So निफ्टी में पॉजिटिव बायस है लाइकवाइज अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल लीडरशिप ली एंड फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट अबव द रीसेंट स्विंग हाई ऑफ 48,850 and we closed at gave a strong close above 49,000 after many weeks. So immediately बैंक निफ्टी में if we see तो कल का गैप इज थोड़ा सा नीचे that is 48,600 के आसपास but immediate per se 49,200 अगर purely trading per se बोले तो 49,200 and 49,000 are the immediate support for bank nifty. This is purely trading per se and ऊपर में 49,650 750 and 50,000 are the immediate hurdles. So the range has shifted higher जो previously 47,500 से 48,800 हुआ करता था, that is 1,200 points range. The range has shifted higher, so अब है 48,750 and 49,750 50,000. So ये 1,200 points की range थोड़ी सी shift हो गई ऊपर की तरफ. तो अभी फिलहाल पॉजिटिव बायस रखना चाहिए बैंक निफ्टी में भी अगर डिप आता है 49,200 के आसपास या 49,000 के आसपास इट्स अ गुड री एंट्री पॉइंट फॉर प्योरली ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हैं इन इंडेक्स then 49,200 and 49,000 are the immediate support where you can see some reversal coming in अगर वो dip आता है तो that would be a good re-entry point while 48,650 750 is the medium term support. ऊपर में 48 49,750 and 50,000 are the immediate hurdle points for bank nifty. So एक stocks की अगर बात करें तो कल we have seen a very good momentum in mid cap and small cap space as well. Usually अगर leadership index बढ़ता है तो usually the frontline stocks move, but yesterday frontline and mid cap and small cap also participated in the rally. And talking about that, one stock we have initiated in a CDI idea is Tata Power. So Tata Power has given a range breakout on a daily scale, almost एक one month का consolidation breakout आया है in Tata Power. So Tata Power is the CDI idea that we are sharing first. It flashes on the terminal as well. So Tata Power is a buy at CMP that is 367 के पास, keeping a support of 350, 355 and look for target towards 385 and 390 on the higher side. So Tata Power थोड़ा सा low beta counter है तो relatively safer bet है and it has given a range breakout on a daily scale, so the momentum should continue going forward, keeping a support of 350, look for target towards 387, 385 and 390 on the higher side. So it's a CDI idea. So basically CDI idea is a holding period of 5 to 7 trading sessions. So do take advantage of this idea and should do well, and the position sizing should be accordingly because it's a position idea, it's not an intraday trade. So Tata Power is the first CDI idea, 367 पे buy कर सकते हैं. तो अड्डी पाता है, you can add, keep a support of 350, look for 385, 390 on the higher side. And intraday अगर trade setup कोई समझ में आता है, I think one stock we have shared on the terminal as well is BSE. So I think for intraday, I'll quickly see. So one stock is looking good is Lemon Tree. The whole hospitality sector as a whole, be it Indian Hotel, Lemon Tree, or even Taj, GVK, Kamath Hotel, all the hospitality stocks has been outperforming, and Lemon Tree, I think you can do an intraday trade in Lemon Tree. So the stock is given a breakout कल and आज follow up आया है, तो आज current market price is 135. This is purely an intraday trade. Keep a support of 132 and look for target of 140 on the higher side. So Lemon Tree is an purely intraday trade wherein you have to buy at CMP that is 135, 134, 135 के बीच में buy कर सकते हैं. Keep a stop of 132 and look for target towards 138 and 130, 140 on the higher side. This is purely an intraday trade. Don't carry your position in this. Tata Power is a CDI idea, and
that is a 5 to 7 day trade, and that you can look into. So two stocks we have shared. अगर कोई और trade समझ आएगा तो we'll definitely share the same. And we have shared the index levels. Index थोड़ा सा sideways कल बहुत sharp momentum था, तो we may see some consolidation today, or we may see थोड़ा सा pause, and then again after a day can again continue the upmove that we have seen yesterday. So पॉजिटिव बायस रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी में अगेन 22,600 इमीडिएट सपोर्ट है, वो अगर डिप आता है 22,700 750 के आसपास, देन यू कैन टेक एन इंटरडे लॉन्ग इन दैट। बैंक निफ्टी में लाइकवाइज 49,200 250 200 इज सपोर्ट। अगर डिप आता है देन यू कैन सी लॉन्ग ट्रेड इन बैंक निफ्टी फॉर फ्रॉम देयर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49,000 48 750, ऊपर में 49,750 and 50,000 are the levels to watch out for. So one CD idea, one intraday trade we have shared. कोई और trade समझ में आएगा तो we'll definitely share the same. And I think in the meantime, अगर किसी की कोई query है, कोई position अटकी है या कोई position hedge करनी है, तो अगर कुछ ऐसी query रहेगी तो we can take that and try to navigate their trades. किसी की position है तो we can guide them better. Sure. So before we move ahead, I will quickly check the BTSC trade for the yesterday that we had shared on Anantaraj, right? So guys, हमने अनंतराज का BTST शेयर किया था for the target of 554, right? तो it's still trading near our buying range. जो भी हमने buying range suggest किया था on अनंतराज, still trading near our buying range only 510 500 अभी 14 हो गया, 510 के आसपास में हमारा buying था, I guess. तो yes, you can definitely hold this trade क्योंकि breakout range पे ही है. So yes, we meanwhile will take couple of queries as well. So what is your view on Cape Fintech for a longer target? Yeah, I think Cape Fintech, अगर किसी को intraday trade, I was just checking the chart only. अगर किसी को intraday trade करना है, then they can do an intraday trade in Cape Fintech. You can buy at CMP that is 974. Keep a stop of 955, 957. Look for target towards 1,000 on the higher side. This is purely intraday. अगर intraday करना है, तो the chart structure is very good for an intraday trade, when you can get 1.5-2% quick move in Cape Fintech. तो एक range निकली है in on the daily scale, so the momentum may continue towards 1,000 levels. अगर किसी की positional trade है तो they can hold their longs and look for this move to get extended towards 1,020 1,035, where the next resistance comes in. तो अगर positional किसी की trade है तो 1,020 1,030 के लिए hold कर सकते हैं. Purely intraday trade किसी को करना है fresh trade, then they can buy at CMP 955 के support से look for 1,000 levels on the higher side. This is purely intraday trade in Cape Fintech. The view on HCC. So HCC फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, बट 2 दिन में पुल बैक आया है, तो आई थिंक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 2580 या 26 के आसपास. तो ये पुल बैक आता है तो आई थिंक 2580 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट. अगर उधर आता है तो अगर ट्रेडिंग पोजीशन है देन यू शुड ट्राई टू एग्जिट वहां पे. अगर किसी की डिलीवरी पोजीशन है तो कीप सपोर्ट ऑफ 2260 एंड होल्ड for 27 on the higher side. I think 27 एक resistance point है and it may face resistance near that, but immediate resistance is 2580 85 के आसपास. So अगर pullback आता है towards 2580 then they should exit अगर trading position है. Right. So what is the view on Suzlon? काफी समय बाद ये query आया है, right हमें. Yeah. Suzlon has been correcting, but एक consolidation में after a correction it has been in this range of 57 से 52. So एक 4-5 points की range में ही trade कर रहा है. तो ऊपर में अगर 57 निकल जाता है तो the stock can see this up move and rally to be extended towards 60 के आसपास. But नीचे में immediate support है 54 and 5450 का.
तो अगर किसी को ट्रेडिंग पोजीशन है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 50 एंड लुक फॉर द अप मूव टुवर्ड्स 5650. अगर 57 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 5650 के, तो 58-59 के लेवल्स आ सकते हैं सुसमा. तो एडिंग टू इट ओनली मोर निकुंज सर, सो क्या अभी सुजलॉन ये राइट बाइंग प्राइस है? जैसे आपने ऑलरेडी बता दी 54.7 के ऊपर क्लोजिंग आती है, जो कि इसका एक लेवल है जहां से हमेशा ये डाउन ट्रेंड में आया, राइट? तो Yes. क्या अभी भी एक राइट एंट्री पोजीशन बन रहा है कि नहीं? क्योंकि हम अगर देख रहे हैं स्टॉक में काफी कुछ दिनों से ही अप ट्रेंड में ही है, राइट? फ्रॉम 48 levels to it nearly came till 56, even it made a high 57 as well, right? तो Yes. तो यहाँ से हम एक डिलीवरी के लिए कुछ दिख रहा है आइडिया I think सुजलॉन में? अगर पोजिशनली आपको लेना है 1-2 वीक्स के लिए, तो वेट फॉर दिस ब्रेकआउट अबाउट 57. अगर 57 के ऊपर ब्रेकआउट आता है देन दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू लुक इनटू सुजलॉन एंड लुक फॉर टारगेट टुवर्ड्स 60. एज ऑफ नाउ इट्स इन दिस, ये कैंडल जो है 7 मार्च का, उसके अंदर ही 7 दिन से इट इज ट्रेडिंग विद इन दिस रेंज ओनली. सो 57 एंड 5160, दिस इज द रेंज फ्रॉम लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशंस. तो अगर ये रेंज निकलती है देन द स्टॉक कैन सी सम फ्रेश बाइंग टुवर्ड्स 59 and 60 on the higher side. So I would suggest that 57 के ऊपर ब्रेकआउट आता है then they can enter a trade keeping a support of 54 and look for 60 on the higher side. सर भूपेंद्र जी का एक सवाल है, अनंत राज का रजिस्ट, अच्छा ओके, द रेजिस्टेंस इज 519 to 521. क्या Okay. करें? प्रॉफिट बुक कर ले या क्या करेगी? प्लीज लेट अस नो ऑन जी. अनंत राज. Just a moment. So Anantrai, I think they can hold, although it was a BTSC, then the basically BTSC means buy today and sell tomorrow. अगर कल लिया तो आज exit करना चाहिए. But अगर positionally hold कर सकते हैं, then keep a support of 485 and hold. I think the stock can see this move getting extended towards 540 levels. So I think 485 के support से hold कीजिए. We may see 535, 540 on the higher side in Anantraj. राइट निकुंज सर. सो भूपेंद्र जी, अनंत राज का हमने कल बाइंग रेंज कुछ 510 के आसपास रखा था. इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग 5 पॉइंट्स अपसाइड, राइट? आज भी 1% का ऊपर है. तो अगर आपको पार्शियली बुक करना है प्रॉफिट, या बुक कर सकते हो, आप हाफ ऑफ द पोजीशन यू कैन होल्ड इट फॉर द डिलीवरी. जैसे 520 निकलता है तो वहां से इजी, जैसे निकुंज सर ने बताया, 540 आराम से दिख रहा है, राइट? सो यू कैन डेफिनेटली choose this one as well, where you can definitely make some profit, right? And trail your stop loss away on the higher side, so that you will definitely not make any loss from here, right? Yes, because I think broader market थोड़ा सा पीछे चल रहा था, but I think the momentum should come in 1 or 2 days. So all these stocks may see this pullback getting extended by 5-7% from here. So अगर position already है तो I think risk reward is favorable for you. So 485 के support से hold कीजिए and then look for 435, 440, 540, 535, 540 on the higher side. So finally after a long time, अगर हमने राइट, हमने जैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा एक तेजी देखने मिला, people started throwing their queries out here on mid cap and small caps as well, right? So what's your view on Union Bank 118 call bought at 3.4? I think you should hold. I think Union Bank is looking good. It has given this range breakout. काफी दिन का range breakout निकला है. So I think you should definitely hold his call option in Union Bank. अगर स्टॉक की सपोर्ट बोलूं तो 116 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. आई थिंक अगर आज यही क्लोजिंग आती है देन स्टॉक कैन सी 122 and 125 on the high side, and which can give momentum in the call option that is bought. So I think definitely you should hold on to Union Bank call option. नीचे में अगर स्टॉक की 116 की सपोर्ट की बात करें तो होल्ड करें, तब तक you should hold on to it. एंड ऊपर में 122 और 125 के टारगेट आ सकते हैं यूनियन बैंक. Rightly said, Nikunj sir. So what is your view on Adani Grid? Adani Green, the whole Adani pack में Adani Port is the only stock that is very good.
बट अगर किसी ने पोजीशन ली है तो कीप स्टॉप ऑफ 870 एंड होल्ड, एंड ऊपर में 950 आता है तो यू शुड एग्जिट हिज ट्रेडिंग पोजीशन. 5 दिन से 3-4 दिन से हायर हाइज बना रहा है बट द कैंडल स्टिक्स आर स्मॉल, तो 870 के सपोर्ट से लुक फॉर 940 950 ऑन द हायर साइड इन द रनिंग प्ले. टाटा गोल्ड. टाटा गोल्ड. टाटा गोल्ड, आई एम नॉट श्योर टाटा गोल्ड कोई ऐसा स्टॉक है. That is second one. ओके, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट एक रेंज में ही है तो आई थिंक 8.5 एंड 8.8 इज द रेंज. तो टेक्निकली 8.58 is the support, ऊपर में 8.89 is the resistance. So, I guess right now we have covered almost all the queries, and parallelly even I was checking couple of stocks as well, Nikunj sir, from my Yeah. end. So we can definitely look for some intraday trade. So अगर मैं 197 था जो कि पेटीएम कम्युनिकेशंस है, राइट, उसमें कल इनने अच्छा खासा एक तेजी देखने मिला था, and आज भी it's nearly 1% upside, 1.3% upside, right? Yes. Although इसमें multiple resistance है, but यहाँ से एक intraday possible है, निकुंज सर, if you can suggest us. Paytm, I think definitely Paytm is looking good. कल ऑलमोस्ट 5-6% ऊपर था, आज थोड़ा सा फॉलो अप आया है एंड थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है ऑन द डेली स्केल. तो but immediately 775 is the resistance. So अगर 775 तक this move can get extended towards 775 and 780. अगर 780 के ऊपर निकल जाए then we can see 800 and 820. But as of now this up move, कल वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग था एंड ऑलमोस्ट स्टॉक 7.5% ऊपर था. आज फॉलो अप आया है but this can get extended towards 775 and 780 at best in this move. तो अगर 775 के आसपास आता है then they should look to book their profits in this move. Then again look for a better entry point near 720 725 on the lower side. So, while just talking about this Paytm, we have quickly saw an upside in the Anantraj as well. Recently 515 या 517 से it's trading near 521, right? Yeah. तो एक quick profit हमें देखने मिल रहा है. भूपेंद्र जी, I definitely know your name and your query on Anantraj. You can definitely go and book your profits. जो BTST हमने कल शेयर किया था, it's trading at 521 right now. 2% upside पे trade कर रहा है. Yeah. So, I think it is top to 500 and hold. I think 540 तो आ सकता है, 535 540. yes. So Bhupender, you can definitely book your profits, और या तो आप second option देख सकते हो, right? What we had suggested to book your partial profit and keep the rest for the delivery point of view, but trailing the stop loss. So yes, we'll take a couple of queries as well. So since we have our Nifty expiry, Nikunj sir, tomorrow. Yeah. So do we have any trades for today? Any of the strategies sort of, क्योंकि अभी naked में buy करना will not be a really good option. True. But I think I'll give you a support. I think 22,800 या 750 के आसपास आता है, then they can look to buy that dip. I think थोड़ा सा dip आएगा, that would be a good entry point, because फिलहाल 20,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, but सुबह से it is trading within that 20-30 points. तो negative 20 होता है, 20 पॉजिटिव होता है, तो ये 40 पॉइंट्स का रेंज है. अगर नीचे में मिलता है then definitely likewise बैंक निफ्टी 49,300 250 के आसपास मिलता है. स्पॉट लेवल्स सारे बात कर रहा हूँ, तो it's a good re-entry point in bank nifty. They can go long on those levels. Even nifty for that matter 22,750 के आसपास आता है स्पॉट लेवल में, then it's a good re-entry point. तो वहां से they can do a long trade in nifty. Priyak ji, I hope this answers your query. For those people who want to initiate a trade in Nifty, you can definitely look for this level. थोड़ा dip पे आता है, you can initiate the trade, right? And to know more detail about it, please join tomorrow as well for the expiry session with us. And we'll take a last query for today. So what is the view on Kolte Patil? कोल्टे पाटिल आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूव फ्रॉम 240 to 360 एक कंसोलिडेशन कर रहा है. तो
अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा बहुत 360, तो अगर 360 के ऊपर निकल जाता है ना, स्टॉक कैन सी फर्दर अप मूव टुवर्ड्स 380 एंड 390 ऑन द हायर साइड, वाइल्स नीचे में एक सपोर्ट है 330 एंड 325 का। तो 330 के आसपास, अगर 330 के आसपास, 335 के आसपास आता है, then they can do a long trade in that and keep a support of 320 and look for 360 on the higher side. So I guess yes, that's it, guys, from our end. And yes, before I end the session, right, I would once again repeat, जिन्होंने भी late join किया, just a very quick news, I would say, जो कि काफी हमारे लिए and आप सबके लिए, एक खुशखबरी है. Viraj definitely will take your last question, Premier Engineer. I would, just announce a small, I would say a win for everyone. It's a big W for everyone, right? हमने जीरो से स्टार्ट किया था. वी आर नियरली 170 के स्टॉकहोम मेंबर्स एंड स्टॉकहोम को ग्लोबली एक नॉमिनेशन मिला है, राइट, ऑन द सीएमएक्स अवार्ड्स, राइट. सो ऑल यू हैव टू डू इज, मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी पिन कर दिया है, राइट. तो स्टॉकहोम एंड अनुज शर्मा हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रोथ मार्केटिंग एंड द लीडरशिप रोल. अनुज को लीडरशिप कम्युनिटी मैनेजर्स के लिए नॉमिनेट किया गया. स्टॉकहोम को the best community as a nominate किया गया. So what you have to do is click on the link that I have shared in the chat box, right? Click on the cast for your vote. आपका नाम भरना है वहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. आप नीचे स्क्रॉल करोगे, the nomination instructions will be there. The growth marketing part, and the executive leader जिसमें आप अनुज शर्मा को वोट कर सकते हो, and just submit it. So that this is the only step, and we want your maximum support here, guys, because it's not a very small thing, right? A global representation हमें nomination में मिला है, so it's a very big W for you and everyone, because आपके बिना आप लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते, right? So we really appreciate your support. So please make sure you go and vote, and please share with your friends, families as well, and we will parallelly keep growing together. So yes, we'll take a last query on Premier Energies, right? Premier Energies, right? Okay. So एक कंसोलिडेशन में है, बट नीचे से एक थोड़ा सा बेस बन रहा है अराउंड 880. तो 880 के सपोर्ट से आप होल्ड कीजिए and look for a move towards 935, 940 on the higher side. So I think before going one last intraday trade, I'll give, I think, Chalet Hotel. I think this is again from the hotel and hospitality sector. So the theme is continuing. So Chalet Hotel is one trade where you can see, keep an intraday trade in Chalet Hotel. Buy at CMP there is 789 with a stop of 777. Look for target towards 810 on the higher side. So Chalet Hotel, Lemon Tree are the intraday trades, and Tata Power is the CDI idea that you have shared in this morning session. So yes, that's it, guys, from our end. Thank you so much, Nikun sir, for sharing a great insight about the market, and काफी सारे अपने intraday trade पे share किया आज. And we hope इसमें हमें अच्छा खासा profit भी देखने मिले, considering कि market थोड़ी तेजी है. Definitely. Yes, that's it, guys, from our end. And Mayur ji, thank you so much. You don't have to vote for me, but आप जाइए, हमें support दिखाइए स्टॉकहोम के लिए. स्टॉकहोम अगर जीतता है globally, that will be a vote for myself. I'll consider that for myself. So please go, make sure you vote for Stockholm, you vote for Anuj Sharma, and जिताइए अनुज शर्मा को और स्टॉकहोम को, because ये छोटी बात नहीं है. ग्लोबली हमें किसी चीज में हम नॉमिनेट हुए, राइट. इट्स अ बिग विन फॉर एवरीवन. इट्स बीन लाइक 2 years हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आने वाले सालों में वी विल मेक दिस अ वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर एवरीवन. So yes, please show your love. Just create a very noise around it, and yes, that's it from our end. Don't forget to join us in the afternoon for our afternoon trading session. And yes, thank you guys for joining. Thank you so much. Thank you, Avinash. Thank you, everyone. Have a good day. You too.